Minimize. Good evening and welcome to IHW Council's special web series on cancer care. I'm Anisha Nair-Thavan, your host for the show. On today's show, we will be talking about lung cancer and the rising incidence of this disease among non-smokers. And lung cancer is becoming a major healthcare problem in India, and it is predicted that there will be more than 1 lakh new lung cancer cases in the next 5 years in India. Lung cancer is ranked fourth overall amongst the various types of cancers in India. Around 70% of lung cancer occurs in men, but over the past decade, the incidence amongst women is on the rise. Cigarette smoking accounts for about 70% of lung cancer cases. And welcome to IHW Council's special web series on cancer care. I'm Anisha Nair-Thavan, your host for the evening. On the show today, we will be discussing the rising incidence of lung cancer amongst non-smokers in India. Lung cancer is becoming a major healthcare problem in India, and it is predicted that there will be more than 1 lakh new lung cancer cases in the next 5 years in India. Lung cancer is ranked fourth overall amongst the various types of cancer in India. Now, around 70% of the lung cancer cases occur in men, but over the past decade, this incidence among women is slowly on the rise. Cigarette smoking accounts for 70% of lung cancer cases. However, a large number of lung cancer patients in India are non-smokers. Why are more non-smokers being diagnosed with lung cancer? Why are the number of deaths from lung cancer far higher than those from colorectal cancer or prostate cancer or breast cancer in our country? Quitting smoking is a sure shot way to prevent lung cancer.
But for non-smokers, how can one reduce the risk of lung cancer? Having the wrong notions about the disease, its reasons, and depending on unscientific explanations can lead to delay in diagnosis and hinder treatment decisions. In this session, we are joined by one of the top oncologists in Delhi who will throw more light on how the nature of lung cancer is changing and what can be done to reduce its risk and improve treatment outcomes. Please welcome Dr. Meenu Walia, Senior Director and HOD Medical Oncology, Max Institute of Cancer Center, Patparganj, Vaishali, who joining us on the show now. Welcome to the show, Meenu ma'am. Hi, Anisha. Hi. All right, a quick introduction. Dr. Meenu Walia is a renowned cancer specialist with almost 30 years of experience in treating cancer patients. She is the first DND medical oncologist of India. She's the author of a hugely popular book among cancer patients, Tips for Happiness in the Shadow of Cancer. And for her outstanding achievements, she has received a host of awards, Inspiring Healthcare Leaders Dronacharya Award and the Most Influential Woman of 2021 Award. A warm welcome, ma'am, on the show. Now, 3 out of 10 Indians who suffer from lung cancer are non-smokers. Now, what explains this thing that even non-smokers get lung cancer? They should not be getting it, right? They've not exposed themselves to this risk. So, very rightly said, Anisha. Nowadays, we are seeing lung cancers in non-smokers also. And the incidence of lung cancer in non-smokers is actually rising. Like what we are seeing is that these cases are increasing, and there are multiple factors for cancers in the non-smokers. But what people should know, it is not that when you smoke, only then you have the risk of lung cancer. You are also exposing the people around you to passive smoking or second-hand smoke, and you are increasing the risk of lung cancer in those two. So majority of the cases are either because of passive smoking, because they live in the company of smokers, or it is also because of the rising level of pollutions. Like air pollution is a major factor. So much so that WHO has actually said that air pollution is the new tobacco and we need to be beware of it. But ये कितना सीरियस मामला है, क्योंकि हमको लगता है कि स्मोकिंग बहुत कूल है और हम नहीं करे तो कोई हमारे आसपास करे तो हमको लगता नहीं है कि उनको स्टॉप करना चाहिए. यूजुअली सोशल सेटिंग्स में कोई ऐसे नहीं बोलता कि देखो अभी यहाँ मत करो या ऐसे हमारे साथ मत करो. तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और क्या ये बड़ा रीजन है? इज इट रियली कंसर्निंग? और पोल्यूशन का हम क्या करें? कि बड़े शहरों में, नॉर्थ इंडिया में, तो छोटे शहरों में जैसे देहरादून, आगरा में भी पोल्यूशन काफी ज्यादा है. क्या ये एक इम्पोर्टेंट सीरियस इशू है? A बहुत ही serious issue है, and I think media has a major role to play, and the same goes for a Bollywood industry or Hollywood industry, whichever you want to blame. It's something like if your favorite hero, I mean somebody who's very good looking and very handsome and very smart, and then he like kind of takes smokes, and then like what the young generation say, he's so cool. All the even the girls also feel if the girls are smoking, they feel that probably like they are they are uh, they are cooler. I mean they are quite cool and or whatever. Like people really like people who smoke. So that kind of a image is being created, and that is among our young generation, and that is very very important that to tell these guys what the real picture is not of a very handsome smart guy who is puffing away on a who's smoking a cigar or a cigarette, but the real picture is, and the sorry state of affairs that come is something that we all see that will never be shown on the Bollywood screen, is something somebody with a distorted face, with an advanced cancer, in pain, suffering on a hospital bed. And this is what we see, somebody who's always coughing. So disease is nobody's friend and disease is never cool. That is what everybody has to understand. There's enough evidence that says that smoking leads to cancer, not only lung cancer, it also leads to so many other diseases, and disease is never cool. That is the basic statement our young generation need to understand. Right. मैम, ये भी माना जाता है कि
मेन को ज्यादा लंग कैंसर होता है क्योंकि वो ज्यादा स्मोक करते हैं। औरतें घर पे स्मोक इतना नहीं करती हैं। यूथ में इतना नहीं देखा जाता क्योंकि उनके इतने ज्यादा पैकेज नहीं होते, क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्मोकिंग इज आल्सो वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लंग कैंसर। पर अब ये बदलते जा रहा है हमारे देश में। So दे वो आर भी young housewives who have cancer, those in late 20s, youth who is developing lung cancer. ये कितना concerning है और ऐसे क्यों हो रहा है? So it is all, again, it comes back, boils down to the same thing. कि lung cancer in the woman, yes, the incidence is increasing. Abhi tak it was mainly a male predominated disease. It is still a male predominated disease, but the incidence in the woman is also increasing. And the reason is uh, one is that women also are smoking. And if you see the younger generation nowadays, so many young girls, they also smoke. They smoke something like we have so many those hookah bars, those parties, and even what the young generation says is short, choti bars, and even in a lot of marriage parties, you will be a hookah corner. And both girls and boys, you see them equally. I mean, hookah is also smoking. It is not That's that we, also smoking because yeah, people of think it's course. a social recreation. No, and it also has almost the same risk. So that is also, but that has become a fashion statement, and this is all this which is increasing in a young generation. Apart from that, pollution doesn't know whether it is a man or a woman. So when the pollution is increasing, when the air pollution is increasing, then yes, we are all being exposed to it. So lung cancers can be seen in women. Then most of these smokers, you find passive smoking for the families around, people who live in the company of smokers. Then there have been lot many women. Sometimes we find women from our rural areas who have been cooking on, we say, angithi. So that is also different kind of the way they are inhaling smoke for a very, very long time. So there can be n number of reasons, and these n number of reasons do explain why the incidence of lung cancer in the women are increasing. Okay, so number of reasons pointed out by you. डॉक्टर वालिया, जो स्मोकर्स और जो नॉन स्मोकर होते हैं, और ये देखा गया है स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, ये काफी कॉमन होता है नॉन स्मोकर्स में। अब जो डिफरेंस है कैंसर के बीच में स्मोकर और नॉन स्मोकर, वो क्या डिफरेंस है, और इसमें इनके ट्रीटमेंट में क्या फर्क पड़ता है, उनकी सर्वाइवलशिप पे क्या फर्क पड़ता है? So it is known that ये जो smokers cancers होते हैं और जो non smokers cancers होते हैं, वो जनरली हिस्टोलॉजिकली और मॉलिकुलर लेवल पे डिफरेंट होते हैं. जब हम लंग कैंसर्स की बात करते हैं तो हम लंग कैंसर्स को दो मोटे से दो तौर पे डिवाइड करते हैं, whether they are small cell lung cancers or non small cell lung cancers. So 75%, 75 to 80% are non-small cell lung cancers, and 25 के करीब percent are small cell lung cancer. Within the category of non-small cell lung cancers also, it is further subdivided into various histological types like adenocarcinoma, squamous cell carcinoma and other types. So इसमें हम कहा जाता है कि जो small cell lung cancer है, it is generally it is a smoker's cancer. तो स्मॉल सेल लंग कैंसर और जो विद इन नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में जो स्क्वामस वेरिएंट का लंग कैंसर है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, वो जनरली स्मोकर्स में पाया जाता है. जो एडिनोकार्सिनोमा होता है वो जनरली नॉन स्मोकर्स में पाया जाता है. तो एक तरह से जो हम उनकी कहते हैं हिस्टोलॉजी एंड प्लस मॉलिकुलर लेवल पे दोनों काफी डिफरेंटली बिहेव करते हैं, दोनों का प्रोग्नोसिस काफी डिफरेंट होता है. इवन जो दवाइयां होती हैं वो भी दोनों में हम थोड़ी डिफरेंट किस्म की दवाइयां देते हैं. फॉर एग्जांपल जो नॉन स्मॉल सेल जो नॉन स्मोकर्स का कैंसर होता है वो जनरली बेटर बिहेव करता है. वो बेटर क्यों बिहेव करता है? क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपको कोई ना कोई टारगेट मिल जाता है जिसमें आप टारगेटेड थेरेपी दे सकते हो, कुछ खाने की दवाइयां दे सकते हो. स्मोकर्स का जो कैंसर है, एक तो स्मोकर्स में क्योंकि अंडरलाइंग लंग कैंसर के अलावा जो बाकी लंग है, जो रेस्टल लंग है, अंडरलाइंग लंग की कंडीशन ही काफी खराब होती है. प्लस स्मोकर्स के जो कैंसर होते हैं वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं. बोथ स्मॉल सेल कैंसर इज वेरी अग्रेसिव एंड इवन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी ज्यादा अग्रेसिव होता है और कम थेरेपीज को रिस्पॉन्ड करता है. तो उनका बिहेवियर, वो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, सब कुछ काफी डिफरेंट होता है.
मैम, ये जो आपने कहा कि नॉन स्मोकर्स को जो लंग कैंसर हो रहा है, हो सकता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से या सेकेंड हैंड टोबैको यूज से हो सकता है, या अगर उनको पहले का भी लंग कैंसर हो तो रेकर हो रहा हो, तो इसका डू वी हैव स्टडीज टू प्रूव दिस, एंड आर वी डूइंग स्टडीज इन इंडिया एज वेल? Because here we have a huge air pollution problem in North India, especially in the winters. So are we trying to collect data? Because most of the data, most of our treatments are based on what we see in the West, while the conditions here may be a little different. So do we have conclusive evidence that yes, this is carcinogenic? So can you come up with the question again? Your voice is not very clear. I could not hear it properly. Ma'am, I'm saying, do we have irrefutable data, say, connecting air pollution and indoor pollution to lung cancer, especially in the Indian situation where we have a huge problem of air pollution in North India? And are there local studies also being done to investigate this? Yes, we have evidence to say air pollution is connected to lung cancer. Even many other environmental factors are connected to lung cancer. There's scientific evidence is available, and that is what I said. I mean, air pollution is known to outdoor air pollution now can be indoor air pollution or outdoor air pollution. Outdoor air pollution is itself known to cause approximately 2 to 3% of lung cancers. So much so that WHO, as I earlier said, has labeled air pollution as the new tobacco, which is killing millions of people annually and damaging the health of so many. And apart from that, there are certain other environmental factors also, which we know they cause lung cancer. What are those environmental factors? For example, one is radon. So radon is a very important air pollutant of indoor air pollution. So where does the radon comes from? जो जितनी भी soil और rocks होती हैं उनमें से एक element release होता है जिसे हम कहते हैं यूरेनियम, और यूरेनियम के further breakdown से radon is a radioactive gas which is released. So this radioactive gas is also causes, is a known pollutant, and it is also known to be a risk factor for lung cancer. इसके अलावा even asbestos. अब asbestos कहाँ पे होता है? कई फैक्ट्रीज में, जहाँ पे कई माइनिंग इंडस्ट्रीज में पीपल जो माइंस में काम करते हैं या टेक्सटाइल प्लांट्स में काम करते हैं या ऐसी जगह में काम करते हैं जहाँ पे इंसुलेशन वाला मटेरियल बनता है, तो वहाँ पे एस्बेस्टोस काफी रिलीज होता है. और एस्बेस्टोसिस जो है, एस्बेस्टोस इज अ नोन ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर, मतलब ऑक्यूपेशन रिलेटेड लोगों को लंग कैंसर हो सकता है. इवन एक टाइप का लंग कैंसर जैसे ही मिलता जुलता कैंसर होता है जिसे हम कहते हैं मीजोथेलियोमा. वो स्पेशली पाया जाता है कि एस्बेस्टोस से में जिन लोगों का ज्यादा एक्सपोजर होता है उनमें ये कैंसर होने के चांसेस. So all these are known environmental factors which increase the risk of lung cancer. Right. डॉक्टर वालिया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूजली जो स्मोकर्स होते हैं उनको ना कुछ सालों बाद जो रेगुलरली करते हैं उनको ना कुछ खांसी टाइप हो जाती है, और फिर वो उनको लगता है ये तो रेगुलर खांसी, स्मोकर्स कॉफ, तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते, और फिर जब वो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने काफी देर हो जाती है. अब नॉन स्मोकर का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये लंग कैंसर हो सकता है, क्योंकि सर्दी, खांसी, ट्यूबरकुलोसिस हमारे देश में इतना फैला हुआ है. हाउ डू वी फिगर आउट फॉर अ नॉन स्मोकर that these are symptoms of lung cancer? So what we always say is what one does not have to ignore is the few warning signals of cancer. आपने बिल्कुल सही कहा अनीशा कि स्मोकर्स में क्योंकि कफ रहती है हर मौसम में, सर्दी खांसी, उनको थोड़ा बहुत उनकी लंग्स कॉम्प्रोमाइज होती है, हर मौसम में उनको सर्दी खांसी रहती है, और जब उनके कफ होती है तो वो शायद उसको रियलाइज नहीं कर पाते. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों स्मोकर्स में जो स्मोकर्स वाले कैंसर है वो जनरली लेट पता चलते हैं, बिकॉज ऑलरेडी क्योंकि खांसी वांसी रहती है तो काफी देर तक वो अपना चेकअप ही नहीं करा. बट what is important to know is आपने गवर्नमेंट के बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे कि 3 हफ्ते से ज्यादा लंबी खांसी आप ये टीबी हो सकती है. All I want to say is अगर कोई भी कफ है जो 3 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रही है, it is not going away and it is getting worse,
दिस शुड नेवर बी इग्नोर्ड। वो टीबी के अलावा कैंसर भी हो सकती है, और आज की डेट में हम यंगर एज ग्रुप में भी कैंसर देखते हैं। हम 40s में काफी लोगों में कैंसर देखते हैं, हम लेडीज में कैंसर देखते हैं, हम नॉन स्मोकर्स में कैंसर देखते हैं। इसके अलावा कैंसर के और साइन, लंग कैंसर के क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? कभी खांसी में ब्लड आना, या फिर परसिस्टेंट कफ के अलावा आवाज भारी हो जाना, होर्सनेस ऑफ वॉइस, सांस लेने में दिक्कत आनी, या सांस लेते समय थोड़ी आवाजें आनी जिसे हम वीजिंग कहते हैं। इसके अलावा भूख कम लगना, सेहत का गिरना, ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है जो हमें लंग कैंसर की तरफ मतलब हमें सोचना चाहिए कि इसमें कहीं कैंसर तो नहीं है। सो ऑल दीज साइंस एंड सिम्टम्स शुड बी एन अलार्म दैट वी हैव टू गेट आवरसेल्व्स इवैल्यूएटेड। यहाँ तक कि काफी जगह, काफी पॉपुलेशन में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हाई रिस्क पॉपुलेशन में है, उनमें लंग कैंसर में स्क्रीनिंग भी कहा जाता है फॉर द हाई रिस्क पॉपुलेशन। मैम, इंडिया में हो सकता है क्या स्क्रीनिंग फॉर हाई रिस्क? क्योंकि इंडिया में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग तो बिल्कुल एडवांस स्टेजेस में आते हैं, चाहे वो स्मोकर हो चाहे नॉन स्मोकर हो। तो अगर क्योंकि कैंसर सच यू डिटेक्टेड अर्ली हैव बेटर आउटकम्स, प्रोग्नोसिस इज बेटर। सो in India, do we have a proper screening system for those who are high risk, say smokers who smoke for many years? So yes, we can do screening for high risk cases even in our country, but looking at the volumes of the people and then the cost effectiveness, because various studies में पाया गया कि X-ray as a screening modality does not help. नीदर स्पूटम एग्जामिनेशन, मतलब बलगम की जांच भी एज अ स्क्रीनिंग मोडालिटी नहीं हेल्प करती। सिर्फ एक ही स्क्रीनिंग मोडालिटी है जो हम स्मोकर्स में कहते हैं या हाई रिस्क पॉपुलेशन में कहते हैं, और उससे कहा जाता है लो डोज स्पाइरल सीटी। So yes, low dose spiral CT is available at some of the hospitals, at some of the advanced places, and उसके हिसाब से स्क्रीनिंग करी जा सकती है, स्पेशली अगर हाई रिस्क पॉपुलेशन है। मैम, और जो हाई रिस्क नहीं है, जो एयर पोल्यूशन झेल रहे हैं या जो चूल्हा फूक रहे हैं, क्या वो भी स्क्रीनिंग के लिए जा सकते हैं? उनके लिए कुछ स्क्रीनिंग है क्या? सो आज की डेट पे देखो, स्क्रीनिंग का मतलब वो होता है कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करे जाएं और उनको कैंसर जल्दी डिटेक्ट किया जाए, एंड उसमें अगर इतने टेस्ट करो और आप उसमें कितनी लाइफ्स को सेव कर सकते हो। तो जनरली जो कैंसर है, लंग कैंसर की स्क्रीनिंग है, वो आज की डेट पे सिर्फ हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए एडवाइज्ड है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज अ सीटी स्कैन, ऑल्दो इट इज अ लो डोज सीटी स्कैन। तो जो बहुत सस्ता नहीं होता, और उसके अलावा सीटी स्कैन का अपना भी एक्सपोजर होता है। तो रिकमेंडेशंस जो कहती है वो सिर्फ हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए कहती है, और बाकी जिनका रिस्क हाई नहीं है, वैसे तो दिल्ली एनसीआर में अगर हम पोल्यूशन में इतना रहते हैं, हम लोग का सबका ही रिस्क काफी हाई होता है। तो ये नॉर्मल हेल्थ जो चेकअप है, या फिर जो सिम्टम्स के लिए अलर्ट होना, वो तो सभी को जरूरी है ना। अगर एक कोई खांसी है जो 3 हफ्ते से ज्यादा चल रही है, अगर मेरी आवाज चेंज हो रही है, अगर मेरे बलगम में खून आ रहा है, तो ये सिंपल चीजें हैं जो विच शुड मेक मी अलर्ट टुवर्ड्स कि इट कैन बी अ प्रॉब्लम। ठीक है मैम, अगर कोई नॉन स्मोकर है और 3 हफ्ते तक उनकी खांसी नहीं जा रही, सोचे कि बस यही सिम्टम है, तो क्या करना चाहिए उनको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, फैमिली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए, क्या करना चाहिए? उनको अपने फिजिशियन के पास जाना चाहिए सबसे पहले। कोई भी खांसी अगर 3 हफ्ते से ज्यादा है, so they need to show to a doctor. Let the doctor decide what is the right investigation to be done. पर मैडम, स्टेप बाय स्टेप होता क्या है? क्योंकि हमारे देश में टीबी भी है और बहुत बार हमने ये सुना है कि मिसडायग्नोसिस होता है। मतलब 6 महीने तक हम टीबी की दवाइयां खा रहे हैं और फिर भी हम ठीक नहीं होते, जाके पता लगता है कि नहीं, टीबी नहीं था, कैंसर था। तो ये हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? Is there a step 1 test for this, eliminate this is not a disease that is affecting you, step 2 test for something else? ऐसे कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं? So again, what you have to understand is कि if you recommend a step 1 test as low dose spiral CT scan for everybody, so what will happen is the way it happened for COVID. Everybody was getting CT scans done. The entire world was getting CT scans done. So what we have to understand is कि हर चीज के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। इसलिए मैम, जैसे टीबी का टेस्ट है, वो तो एक ब्लड टेस्ट से हो जाता है, आई थिंक स्प्यूटम टेस्ट भी होता है।
तो क्या ये करवा के पहले पता लगाए, फिर अगर यहाँ कुछ नहीं मिलता फिर कुछ और किया जाए, ऐसी कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ है कि हम दूसरी बीमारियों को पहले एलिमिनेट कर दें? इसके स्टेप बाय स्टेप जो ही है कि सबसे पहले एक डॉक्टर या फिजिशियन को मिलिए. लेट द फिजिशियन इवेलुएट कि आपकी खांसी किस तरह की है. Is it a smoker's cough or is it a cough which might be because of malignancy? Is it the cough only because of allergic rhinitis or allergic bronchitis, or is it something else? Let him evaluate the history completely. Let him check you physically and then advise the test. The first step a physician will normally advise is an X-ray test only. After initial history and examination is an X-ray test. And X-ray में कोई suspicion आता है, so generally we go for the next step, that is the CT scan in a normal population. Not if we are not thinking of a high risk. In a high risk population, if symptoms are there, so even if an X-ray is negative but the symptoms are there, you might have to go for more advanced tests. What we have to understand is, but when we say that cancer is generally diagnosed in a late stage, and by the time most of the people come, yes, lung cancer is diagnosed in a late stage, and by the time majority of the people come, it is already advanced. The reason is not that people go to the doctor in time. The reason is because lung cancer, the majority of the problems are cough, which will happen majority of the time in smokers. So cough, I mean, you will be taking over the counter treatment. आप बहुत मतलब बाय द टाइम द पर्सन रीचेज अ डॉक्टर, इट इज जनरली वेरी लेट. पहले वो कफ सिरप्स चलते रहते हैं, बिकॉज कफ सिरप्स के लिए आपको कोई मतलब हर जगह दवाइयां मिलती है ओवर द काउंटर. आप नॉर्मल खांसी की दवाइयां लेते रहते हो, घर के नुस्खे चलते रहते हैं वहीं पे. मतलब RMP, मतलब देयर सो मेनी स्टेप्स बिफोर. मतलब बहुत बार तो लोग केमिस्ट, हमारे देश में तो केमिस्ट से ही दवाइयां लेके लोग, आधे लोग तो उसी से अपना इलाज कराते हैं. By the time they reach to a doctor, then it is already a considerable time which is lost. So this is something to be aware that this is also a problem. This is also a problem, and these are the signs and symptoms. अगर कुछ भी लंबा चल रहा है, then we need to evaluate ourselves. Right. मैम थोड़ी ट्रीटमेंट की बात करते हैं. ये अभी रिसर्च चल रही है और ये देखा जा रहा है कि इम्यूनोथेरेपी भी लंग कैंसर ट्रीटमेंट में काफी इफेक्टिव है. और स्टडी से दिखाया है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके लिए इम्यूनोथेरेपी कभी कभी बहुत अच्छी तरह काम कर रही है. डिपेंडिंग ऑफ कोर्स on the genetic makeup of the cancer, immunotherapy seems to be effective for smoker related lung cancers. What can then be good treatment options for non-smokers then? Yes, you are very right in saying that कि smokers cancers में immunotherapy के अच्छे result पाए जाते हैं. immunotherapy lung cancers में, कई lung cancers में बहुत ही अच्छी तरह response करती है. We have various monoclonal antibodies, ये immuno-oncology का part होते हैं, इसमें बहुत अच्छे responses होते हैं. इसके अलावा जो नॉन स्मोकर्स का कैंसर है उसके लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस है. जैसे मैंने पहले कहा कि नॉन स्मोकर्स के जो कैंसर होते हैं वो ज्यादातर एडिनोकार्सिनोमास होते हैं. उसमें बहुत बार आप टारगेटेड मेडिसिन दे सकते हो. यू कैन आइडेंटिफाई, जैसे एडिनोकार्सिनोमा में आप बायोप्सी में कुछ फर्दर टेस्ट करते हो, मॉलिक्यूलर लेवल के टेस्ट करते हो, आप डिफरेंट जेनेटिक म्यूटेशन देख सकते हो. उसमें से कुछ तरह की म्यूटेशन होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे EGFR म्यूटेशन, एक्सॉन 19 की म्यूटेशन है या एक्सॉन 21 की म्यूटेशन है. ये म्यूटेशंस अगर होती है तो आप बहुत सारी टारगेटेड मेडिसिन, आप सिंपल खाने की दवाइयां देके इन पेशेंट को बहुत लंबा सर्वाइवल दे सकते हो. इसी तरह से और भी कुछ मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स होते हैं जो नॉन स्मोकर्स का कैंसर होता है, जिसमें आप ओरल टैबलेट्स देके, टारगेटेड मेडिसिन देके पेशेंट का सर्वाइवल एंड प्लस कीमोथेरेपी वगैरह देके आप काफी हद तक एनहांस कर सकते हो. आप यूजुअली ट्रीटमेंट क्या होती है लंग कैंसर की, और ये ट्रीटमेंट स्टेजिंग के मुताबिक कैसे बताती है? जैसे आप अर्ली स्टेज पे आओगे तो क्या सर्जरी इज एन ऑप्शन होता है क्या लंग सर्जरी? क्योंकि ब्रेस्ट और इसे हमने सुना हुआ है. देखो, किसी भी कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है वो स्टेज ऑफ कैंसर पे डिपेंड करती है. अब लंग कैंसर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है अर्ली लंग कैंसर, एक होता है लोकली एडवांस्ड लंग कैंसर, मतलब लोकली है जहां पे लंग से स्टार्ट हुआ है पर आसपास की गांठों में है, और तीसरा कहा जाता है जब लंग कैंसर थोड़ा फैल जाता है, जिसे हम कहते हैं मेटास्टेटिक या एडवांस लंग कैंसर. जो अर्ली लंग कैंसर है
उसमें यस सर्जरी इज डन, सर्जरी का काफी रोल होता है, बट अर्ली लंग कैंसर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम डायग्नोज। अर्ली लंग कैंसर जनरली, क्योंकि अर्ली लंग कैंसर में कई बार सिम्टम्स भी नहीं होते, तो अर्ली लंग कैंसर उन केसेस में डायग्नोज होते हैं अगर उन्होंने अपना नॉर्मल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया। तो आज की डेट में उन केसेस में किसी और वजह से उन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया और उसमें कई बार हमें पाया जाता है कि अर्ली लंग कैंसर है। पीपल हु आर अवेयर, yes, nowadays we see कि there is some educated class which do come up with early lung cancer। तो अगर अर्ली लंग कैंसर होता है तो यस उसमें हम सर्जरी भी कर सकते हैं। और बहुत सारे अर्ली लंग कैंसर्स में अगर हमने सर्वाइवल इंप्रूव करना है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, काफी सारे अर्ली लंग कैंसर्स में भी सर्जरी के बाद सिस्टमिक दवाइयां देनी जरूरी होती है अगर हमें कैंसर को अच्छी तरह से खत्म करना है। जो लोकली एडवांस लंग कैंसर है, मतलब वो आसपास थोड़ा फैला हुआ है, मतलब लंग में है और आसपास जो मीडियम की गांठें हैं उसके अंदर है। उन केसेस में नॉर्मली, जिन केसेस में सर्जरी नहीं हो सकती, तो इन केसेस में जो दो मेन ट्रीटमेंट होती है, कीमोथेरेपी और सिकाई यानी रेडिएशन थेरेपी। दीज आर द कॉन्करेंट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाती है। तो इसका वेरियस परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या सीक्वेंसिंग में नॉर्मली कॉन्करेंट कीमो और रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। पर जो एडवांस लंग कैंसर है, जिनमें पानी लंग में पानी भर जाता है या मेटास्टेटिक लंग कैंसर है, तो उन केसेस में सिस्टमिक थेरेपीज। तो सिस्टमिक थेरेपीज में क्या आता है, सिस्टमिक थेरेपीज में कीमोथेरेपी भी एक तरह की सिस्टमिक थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी भी एक तरह की सिस्टमिक थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपीज भी एक तरह की सिस्टमिक थेरेपी है। तो सिर्फ इम्यूनोथेरेपी लगनी है या इम्यूनो और कीमो का कॉम्बिनेशन लगना है, सिर्फ टारगेटेड लगनी है या टारगेटेड और कीमो का कॉम्बिनेशन लगना है, या सिर्फ कीमोथेरेपी लगनी है, तो ये बहुत सारे डिफरेंट सिनारियो होते हैं। वो पेशेंट के आप बायोप्सी रिपोर्ट के, उसके मॉलिक्यूलर टारगेट्स के, उसके बहुत अच्छी तरह से जांच करके एक फाइनल प्लान पे आते हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर द पेशेंट, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। मैम, आप मैसेज क्या देना चाहेंगी जो पेशेंट्स है, क्योंकि आपने किताब भी लिखी है। मैंने एक बार पढ़ा था, एक वेबसाइट पे मैंने पढ़ा था, एक अमेरिकन साइक्लिस्ट थी, वो बहुत फिट रहती थी और वो हमेशा साइकिल करती थी, एंड शी वाज डायग्नोज्ड विद stage 3 lung cancer. So she was shocked कि how can this happen to me? I've been a healthy person. But she overcame it. Even at stage 3, she got recovered completely, and again she went to compete for cycling. So there are some very inspiring stories. What is it like for people who have lung cancer in India? What would you like to tell them? So not only lung cancer, people who have any cancer, the basic message that I always want to give is that hope is a very, very powerful thing. अगर उम्मीद है तभी मुमकिन है। और हमने बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारे केसेस देखे हैं where they have been told, where patients have been told कि कुछ नहीं कर सकते, घर ले जाओ, सेवा कर लो। And we have seen people who have responded positively to treatment and have been able to live, even stage 4 lung cancer patients, where we can increase survival, we can increase quality of their life. So many things can be added on. What is important is never, 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 ever lose hope. That is very, very important. Right. But that, thank you so much, that Dr. doesn't Walia. mean that we, but that doesn't mean that we don't give preventive health appropriate behavior importance. So prevention is always better than cure. Right, and a good lifestyle too. That will, especially keeping tobacco at bay, not just for lung cancer, for other cancers also. A good lifestyle really makes a big difference. Thank you so much, Dr. Walia, for speaking with us and sharing information about lung cancer and how increasingly we are seeing non-smokers coming up with lung cancers, how people can reduce their risk, and how they can seek early treatment. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you, Anish. Do follow us on Facebook to get all the updates on our upcoming shows. We're going to wrap it up here. If you have any questions or feedback, do send them to us. You can just type it in the message box in this post. Till we see you again, stay at home, stay safe. Goodbye and see you soon.